Bachcho, good morning. The topic we are going to discuss today is idioms and phrases. Idioms and phrases. It's as important and interesting as any of the topics we have discussed so far, and we'll be discussing in days ahead. Well, in this topic, the method I have adopted is a bit unique. It's different from that of any other teacher. Why? Because we just write the idiom, its meaning, and then use in a sentence. If you use the idiom differently in the sense in our day-to-day life. Okay, I'll just show you with example. Suppose a conversation between a mother and a son takes place. How I have used some of the words, replacing them with idioms. See, what happens is once a mother comes home, once a mother comes home and finds finds that her son is not in a good mood, is not in a good mood. She was surprised. She was surprised. She was surprised means she was taken aback. हैरान हो गई, भौचक्की रह गई. She was taken aback. Was surprised को किससे रिप्लेस किया हमने? Taken aback. वो जो है हैरान हो गई. Because क्यों? Because his books were lying. Whose books? Her son's books were lying here and there. Here and there means we can say in place of this lying here and there, lying at 60s and 7. बिखरी हुई थी. His books were lying here and there in the room. There in the room. Were lying here and there in the room. She was taken aback. She was surprised. First of all, Ram was not in a happy mood. उनका जो बेटा था वो भी अच्छे मूड में नहीं था. She means his mother did not become angry. It means she didn't lose temper. She didn't lose temper. She started advising him, saying, क्या कहा? Please, बेटा, keep your books properly. क्या कहा अपने बेटे को? Keep your books properly means in an apple pie order. Apple pie order. भाई एक के ऊपर एक रखो, आराम से इधर उधर फैली हुई है. उन्हें नसीहत दी. She loved her son very much. She loved her son very much. She loved her son very much. And could make any sacrifice for him. And could make any
sacrifice for him. Means he was very dear to his mother. Very dear, very loving. It means he was an apple of his mother's eye. To be very dear. देखो बच्चों, it was a kind of conversation that took place between a mother and her son. The first idiom that we have used is taken aback. हैरान हो गई. And the second one, at 6s and 7s, इधर उधर बिखरी हुई थी. She did not become angry. मतलब उसने गुस्सा नहीं किया. She didn't lose temper. Keep your books properly. उसने कहा, उसको एडवाइस दी. उसने कहा कि keep your books in an apple pie order. भाई properly रखो. She loved her son very much. बहुत प्यार करती थी. It means वो कुछ भी उसके लिए सेक्रीफाइस करती थी. बहुत प्यारा था. He was an apple of his mother's eye. तो अपनी माँ की आंखों का क्या था? तारा था. So we have used these idioms. We'll continue. This conversation has not yet ended up. अभी खत्म नहीं. अभी और आगे बढ़ेंगे. Then she says, बेटा देखो, I know you are busy in sports. You are busy in sports. You were busy in sports. आप किसमें बिजी थे? स्पोर्ट्स में थे. Now you shouldn't leave. You shouldn't waste your time. Now you should not waste your time. Now you should not waste your time. I have seen the students burning the midnight oil. I have seen the students working very hard. Seen the students studying till late near the exam. यानी कि I have seen the students studying till late means burning the midnight oil. क्या मतलब इसका बच्चों? Burning the midnight oil. कब? Near the exam means when the exam is at hand. At hand का मतलब near the exam. At hand means near. When the exam is at hand, क्या उसकी माँ क्या कह रही है? I have seen the students studying till late at night. Till late at night. रात को देर तक पढ़ते हैं. कब? Near the exam. मतलब you didn't study, you are busy in your sports. आप busy थे. She wants her son to burn the midnight oil. If you do so, अगर आप ऐसा करोगे, I am sure, मुझे विश्वास है, you will show a good result in the exam. To show good result means you will come out with flying colors. You will come out with flying colors. जीत जाओगी, यानी कि अच्छे नंबर आएंगे. You will come out with flying colors means अच्छे अव्वल मार्क्स आना, जीत जाना. If you don't, okay. For this, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Don't waste your time. Don't waste your time. अपना टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है?
those who come and disturb you, जो आते हैं आपको डिस्टर्ब करते हैं, keep them away. Keep them away means उनको दूर रखो. Keep them away का मतलब क्या हो गया? Keep them at an arm's length. Keep them at an arm's length. मतलब उनको दूर रखो अपने से, so that you don't get disturbed and concentrate on your studies. Just concentrate on your studies and don't get disturbed. Okay. देखो बच्चों, idioms again. At an arm's length, burning the midnight oil, at hand, come out with flying colors. So this is how idioms have been used, and your language has become highly impressive. It's going to leave an impression, a lasting impression on the person you are talking to. जिसे आप बात कर रहे हो उसके ऊपर बहुत अच्छा impression पड़ेगा. Have you understood? Again, it still continues. Then she says she met one of his teachers. So teacher se mile, and the teacher was saying that you don't study hard. It means your teacher doesn't like you. इसका मतलब क्या बच्चों? Your teacher doesn't like you. आपको लाइक नहीं करता. You are not sincere. आप sincere नहीं हो. इसका मतलब doesn't like you means you are not in the good books of your teacher. यानी आप अपने टीचर की नजरों में अच्छे नहीं हो. If you study, you will be in the good books of your teacher. Right now, you are in his bad books. अभी क्या हो आप इसमें क्या हो? You are in his bad books. आप उसकी नजरों में अच्छे नहीं हो. ठीक है? You have to prove your mettle. You are talented. I know. You are talented. You are talented. You have to prove your worth. You have to prove your worth. Means you have to prove your mettle. You have to prove your क्या mettle. You have to prove your mettle. आपके अंदर जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उसको दिखाना है, उसको उजागर करना है. Okay, okay. देखो बच्चों, a number of idioms have been discussed in this conversation. Let's think of the idioms which are important. No doubt, all the idioms are equally important. And the more you read, the more you will be able to enhance your knowledge. जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा याद करोगे. But you know, cramming, I never advocate. I never say you just cram, गोटा लगाओ, mugging करो. No. What I want to convey to you is, मैं क्या कहना चाहता हूँ? You read the idioms. ठीक है? And whenever you talk, जब भी आप बात करो, whenever you just interact with somebody, जब भी आपकी conversation हो किसी के साथ, think of the idiom which you can use in that conversation. आप उस idiom के बारे में सोचो जो कि यूज कर सकते हो. इससे क्या होगा? You develop the habit of using the idioms. When you are alone, sit with your eyes shut. Eyes बंद करके बैठ जाओ. Begin pondering over the idioms which you have revised or learned. जो आपने रिवाइज किया है, लर्न किए हैं. And think of the sentences. You just think you are talking to somebody. See, imagine, कल्पना करो, आप किसी से बात कर रहे हो, and how those idioms can be used there. वो idioms वहाँ कैसे use हो सकते हैं. By and by, धीरे धीरे, you know, क्या होगा? You will have a mastery over it. You will master this. क्या? Art of using idioms. Idioms को use करने की जो mastery है ना, आपके अंदर आ जाएगी. And you will be leaving a good impact on others. अब देखो, I am going to write some idioms for you, which I think are important, and we'll use them in sentences. बात करेंगे उनको, मतलब उनके बारे में sentences बनाएंगे.
उनको यूज कर. नंबर 1, I'll be writing 10 to 15 idioms now. देखो बच्चों, नंबर 1 here. It's I say ना कि all the idioms are important, equally important to get in somebody here. कोई किसी के बालों में तो घुसेगा नहीं, नहीं घुसेगा ना, घुसेगा नहीं. आप देखो, अभी आई टॉक अबाउट द इडियम, थोड़ी और मैं बात करूंगा. आफ्टर राइटिंग दिस 10 words, I'll get on to the topic idioms again, just to define it in a better way. To get in somebody's here. कोई किसी के बालों में घुस सकता है? नो. इट मीन्स टू मेक वन फील इरिटेटेड. टू मेक वन फील इरिटेटेड, किसी को इरिटेट करना. To make one feel irritated. Hey, take that child away. He tries to get in my hair. He always tries to get in my hair. Okay, got it? Now see, let your hair down. To let your hair down means relax. Means relax. Because suppose I am an interviewing officer and a candidate comes to me. When I have a look at him, what I see is he is perspiring. पसीना आ रहा है. He is sweating like anything. उसको बहुत पसीना आ रहा है. मैं कहता हूँ, please sit down and let your hair down. Means relax करो. मतलब I just want that he should be at ease before the interview begins, before the interview is conducted. So this is how we can use it. Let your hair down. Next, a hair thin escape. A hair thin escape. A hair thin. What does it mean? बाल कैसे होते हैं? कैसे होता है बच्चों? Yes, बोलो. A hair thin, or you can write a hair breadth. I think it's better. A hair breadth escape. बाल के कितने होते हैं breadth? A hair breadth escape. जैसे बाल के होते हैं ना breadth, उतना मतलब it means a narrow escape. A narrow escape. A narrow escape. देखो बच्चों, he met with an accident yesterday and had a hair breadth. क्या? He had a hair breadth escape in the accident. Accident में से उसका बाल बचाओ, बाल बचाओ. मतलब he met with an accident and had a hair breadth escape. बाल बचाओ. देखो बच्चों, if you write the idiom and think of them practically, yes. If you say, I had a narrow escape, good. If instead of this, I had a hair breadth escape in the accident I met yesterday, okay, it will be a bit impressive. इस जो है क्या रहेगी बच्चों? Impressive. देखो ear. Suppose I am in the class and what I see is the students are not listening to me. बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं.
they are lost mentally somewhere else. Mentally somewhere, or physically they are present, but mentally they are lost somewhere else. और कहीं उनका ध्यान. अब now what I say, hey, lend me your ear. क्या कहूँगा? Lend me क्या कहते हैं बच्चों? To lend ear means to lend someone ears. Okay, to lend ear means कान उधार देना. मीन्स मैं कह रहा हूँ lend me your ear, मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो. To listen to somebody carefully. Okay, please lend me your ear. Please lend me your ear. Now see, to be all ears to. To be all ears to means to be all ears to means किसी बात को ध्यान से सुनना. I was all ears to him. मतलब he was teaching us, he was saying something to us, he was talking to us, and I was all ears to him. मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था. तो इसका मतलब क्या हो गया? To listen to somebody, to listen to someone patiently. अब देखो बच्चों, एक होता है deaf ear, deaf. I tried to advise him, but it fell on his deaf ear. What I said, or let's make it more simple. What I said fell on his deaf ears. ये सही नहीं लिखा जा रहा. ही deaf ears यानी कि कोई असर नहीं हुआ. टू फॉल फ्लैट, बेकार जाना. अब देखो बच्चों, I to agree. I to I means to agree. AGREE, to agree to someone's idea or suggestion or proposal. देखो बच्चों, after the meeting, Ram and Mohan seemed to be eye to eye with each other. After the meeting, what happened? Ram and Mohan, और सिंपल बनाओ, Ram and Mohan were eye to eye with each other. Eye for an eye. An eye for an eye. Eye for an eye और an eye लगा लो. An eye for an eye. यानी to have the feeling of revenge. Revenge की feeling रखना, याद रखना, revenge word याद रखना. He believes in an eye for an eye when it comes to revenge. इतना याद कर लो बच्चों. और when it comes to taking revenge, ये भी लिख सकते हो.
पर अच्छा ये an eye for an eye means to have the feeling of taking revenge. ये revenge याद रखना है. Got it? I don't know what the number is. Still, I am starting from number 1. To turn, what is this? To turn a blind eye. To turn a blind means to ignore. अनदेखा कर देना. The principal turned a blind eye. The principal turned a blind eye to his staff's lateness. Lateness समझो LATE. The principal turned a blind eye to his staff's lateness. Staff है. Late आया किसी दिन. And but the principal क्या किया? He turned a blind eye to their coming late. उनके staff members, teacher, subordinate जो थे, they came late, but he turned a blind eye means ignore कर दिया. Got it? Now see, if you think this idiom, hey, if I am sitting with you and what I see is कि you just ignore the mistakes of your subordinates, मैं कहूँ, why do you turn a blind eye to your staff members all the time? आप उनकी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर क्यों करते हो हमेशा? Why do you turn a blind eye to the mistakes committed by your staff members? So it means you have to use it this way. अब देखो, to catch somebody's eye, to catch somebody's eye or eyes, whatever you want to write. To get attracted, यानी क्या करना? Attract करना. He delivered such a fantastic speech. उसका speech इतना अच्छा था. और you can say extempore. पहली बार जो उसने दिया उसको extempore बोल सकते हो बच्चों. इसको क्या बोलोगे? Extempore. बोल के देखो extempore. बहुत अच्छा वर्ड है ये. फर्स्ट टाइम जो स्पीच दिया जाता है ना बच्चों उसको बोलते हैं. फर्स्ट टाइम जो स्पीच दिया जाता है, पहली बार जो स्पीच देते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्परी. एक्सटेम्परी. देखो, हिज एक्सटेम्परी कॉट माय आईज. बहुत अच्छा याद रखना इसको. हिज एक्सटेम्परी caught my eyes. मैंने I got attracted. कैसे? उसके स्पीच की वजह से I got attracted. समझ गए? Hey, have you understood? His extempore. Extempore means the speech given by somebody for the first time. For the first time, that is known as extempore. Okay, let's talk about some other idioms. We still have time. Next, आप देखो. Now these idioms will make you laugh. Old flame. Old flame means बच्चों गर्लफ्रेंड. क्या हो रहा है आज जी?
when he saw his old flame in the market, क्या लिख रहा हूं मैं? When he saw his old flame in the market, he was beside himself with joy. इसमें क्या है? ओल्ड फ्लेम आप लिखोगे, ओल्ड फ्लेम बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय मीन्स उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ. नेक्स्ट, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, रेड हैंडेड होता है ना, कई बार पढ़ा होगा आपने, रेड हैंडेड. रेड हैंडेड ये क्या होता है? इफ वन इज कॉट डूइंग समथिंग इलीगल और रॉन्ग, उसको कहते हैं, कैसे पकड़ना? ऑन द स्पॉट पकड़े जाना, किसी को पकड़ लेना रंगे हाथों. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड कब तक, जब कोई गलत काम कर रहा है. ही वॉज कॉट रेड हैंडेड लास्ट नाइट. ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग द गुड्स. ही वॉज इन द हैबिट ऑफ ट्रेवलिंग. ओके छोड़ो उसको. ही वॉज कॉट हैंडेड, ही वॉज कॉट कैसे? रेड हैंडेड लास्ट नाइट. ठीक है. ही एंटर्ड somebody's हाउस. किस लिए टू स्टील समथिंग फ्रॉम देयर, लेकिन ही वॉज कॉट रेड हैंडेड, उसको पकड़ा गया. रंग हाथों जो है बच्चों उसको पकड़ा गया. एक बहुत अच्छा है इसकी तरह, ब्लू स्टॉकिंग. ब्लू स्टॉकिंग देखो बच्चों, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टॉकिंग, वन हु इज एजुकेटेड. वन हु इज एजुकेटेड. इन द ओल्डन डेज, पहले के टाइम में वीमेन, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड स्टडी. उनको बाहर नहीं जाने देते थे पढ़ने के लिए, भाई गो एंड स्टडी, गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, पढ़ाई कर लो, नहीं. इट वॉज अ टैबू, उनके लिए मनाही थी. लेकिन इसलिए कहते कि देयर वर हार्डली एनी ब्लू स्टॉकिंग्स इन ओल्डन डेज. कैन यू एजुकेटेड, ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग्स वर रेयर इन द ओल्डन डेज. पहले समय में, पुराने जमाने में ब्लू स्टॉकिंग्स, ब्लू शॉर्ट में लिखा है, ब्लू स्टॉकिंग्स वर रेयर इन द ओल्डन डेज. अब देखो नेक्स्ट, शोल्डर टू शोल्डर ऐसे जल्दी लिखा जाता है, कंधे से कंधा मिला के. इफ यू कंटिन्यू वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर यू विल विन. ठीक है. शोल्डर टू शोल्डर मीन्स यूनाइटेडली, इकट्ठे रह के, हेल्प करके. इफ यू वर्क शोल्डर टू शोल्डर, if you space shoulder is going to be here, you have to write the idiom here. Work if you work shoulder to shoulder, you will succeed. You will, ठीक है, you will succeed, आप सफल हो जाओगे. अब देखो, to look over one's shoulder,
आफ्टर फ्लीइंग द जेल, आफ्टर फ्लीइंग द जेल क्या हुआ? आफ्टर फ्लीइंग द जेल मतलब टू फील फ्राइटेंड, टू फील फ्राइटेंड भाई, टू फील फ्राइटेंड ये एच है भाई, टू फील फ्राइटेंड आफ्टर फ्लीइंग द जेल, जेल से भागकर, आफ्टर फ्लीइंग द जेल, आफ्टर फ्लीइंग द जेल he continued looking, he continued looking over his shoulder by and by, gradually or slowly. देखो आप इसका मैं क्लियर नहीं किया, आफ्टर फ्लीइंग द जेल, जेल से भाग के, ही कंटिन्यूड लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, मतलब कोई भागता है गलत काम करके, यू नो, ही कंटिन्यूड लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, कि somebody might be, you know, chasing him, कोई इसका पीछा कर रहा होगा, तो ही कंटिन्यूड लुकिंग ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधे के पीछे ऐसे देख मुड़ के देखता रहा। देखो बच्चों, बाय एंड बाय नेक्स्ट, इट्स रियली गुड, यू कैन यूज इट देयर। देखो बच्चों, आई एम टीचिंग यू, बाय एंड बाय यू विल लर्न इट, धीरे धीरे ग्रेजुअली सीख जाओगे, ठीक है। बाय एंड बाय यू विल प्रोग्रेस, यू विल लर्न, यू विल मास्टर इट, बाय एंड बाय यू विल मास्टर इट, आपकी मास्टरी हो जाएगी। बाय एंड बाय यू विल मास्टर इट, बाय एंड बाय। नेक्स्ट, by and large मीन्स कुल मिलाकर, ऑन द होल, ऑन द होल, कुल मिला के। देखो, इफ आई से राम इज अ मिस्चीवस बॉय, ही डिस्टर्ब्स अदर्स, ये वो कुछ है, किसी बारे में कोई बात करें, बट लास्ट में क्या कहते हैं? बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज, ओके। बाय एंड लार्ज क्या मतलब इसका? क्या मतलब बच्चे इसका? बोलो, कुल मिलाकर। बाय एंड लार्ज का मतलब क्या है? ऑन द होल, कुल मिलाकर। चलो मैं लिख रहा हूँ, बाय एंड लार्ज ही इज ऑनेस्ट, ऐसे लिखता हूँ दोबारा से, बाय एंड लार्ज ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है भाई, कुछ भी बात हो, कितनी बुराई कर लो, बट ही इज ऑनेस्ट, वो क्या बच्चों? ईमानदार है। यू कैन क्रिटिसाइज हिम, यू कैन टॉक अबाउट हिम, यू कैन से एनीथिंग अबाउट हिम, बट बाय एंड लार्ज, कुल मिला के क्या है? ही इज ऑनेस्ट। आप देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा आइडियम है रिलेटेड टू फिंगर्स, ये आपके लिए है। ऑन वंस फिंगर टिप्स, ऑन वंस फिंगर टिप्स, फिंगर के टिप्स से होना मीन्स याद होना। ही हैज 500 idioms, he has 500 idioms on his finger tips, मतलब उसको याद है, टू रिमेम्बर, REMEMBER, ठीक है। he has 500 idioms on his फिंगर टिप्स, भाई मुझे याद है, कोई सा ही पूछ लो फटाफट आंसर देगा। फिंगर टिप्स, देखो एक बहुत अच्छा आइडिया में याद आया, हम क्या करते हैं? औरों की गलतियां निकालते रहते हैं, निकालते हैं ना, वी कंटिन्यू
pointing our fingers at others. तो क्या idiom है ये? To point out one's finger at others. दूसरों को क्या है? ब्लेम देना, दोषी ठहराना. We should not point out our finger at others. We should not point out our fingers at others. Can you learn it? Finger. देखो एक और इम्पोर्टेंट है, क्रॉस फिंगर. क्रॉस फिंगर का नाम क्या है? ऐसे. कैसे फिंगर्स? क्रॉस फिंगर्स. इसका मतलब क्या है बच्चों? व्हाट डज इट मीन? बोलो क्या मतलब इसका? ये क्रॉस्ड फिंगर क्या मतलब इसका? टू वेट for some result, for some good, or to hope for some good result. ठीक है. He sat with his fingers crossed. He sat with his fingers crossed when the result was being declared. When the result was being declared. Got it? Next. देखो बच्चों बहुत अच्छे आइडिया में टू ब्रेक लेग. टू ब्रेक लेग इसका क्या बच्चों? इसका मतलब तो है गुड लक. वैसे हम कहेंगे तो अजीब सा लगेगा. टू ब्रेक लेग. इफ समबडी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डांसिंग कंपटीशन हम क्या कहेंगे? ओके ब्रेक योर लेग मीन्स गुड लक. ये नहीं कि टांग तोड़नी है. टू ब्रेक लेग का मतलब क्या है? गुड लक. इसलिए इट्स फॉर द डांसर्स. बिफोर शी लेफ्ट आई आस्क्ड हर टू ब्रेक हर लेग. एनीवे हैव यू अंडरस्टूड इट? I said all the idioms are equally important. All the idioms are equally important. देखो to bring to book, to bring to book, to punish someone, to punish someone. He was brought to book for the crime he committed. He was brought to book. He was brought to book for the crime he had committed. He had committed. देखो बच्चों we have discussed a number of idioms today and we will continue discussing. I haven't yet put an end to it. I haven't yet put an end to this topic.